Chalo beta. So the next topic is basically the redox reaction. The initial part of this redox reaction is exactly the same as it was in O levels. Uh, the type of reaction in which the oxidation and reduction taking place simultaneously. You have two elements. One element is getting oxidized and the other element is getting reduced. And they sometimes ask the definition of redox reaction. So definition लिख लेते हैं and then we move forward. The type of reactions. In which oxidation and reduction taking place. Simultaneously. ठीक है? Now, in this definition, हमने दो terms use की हैं. The term oxidation and the term reduction. And you know from the O levels कि oxidation का मतलब क्या होता है और reduction का मतलब क्या होता है. तो let's revise oxidation and reduction. All the concepts of oxidation and reduction. So anything you remember from O levels about oxidation? No. Loss of electron, gain of oxygen, or addition of hydrogen. ठीक है जनाब. So the first thing is about the gain of oxygen. You can write it in any sequence. ठीक है. The second thing, loss of hydrogen. And the third thing is the loss of electrons. Yes, the same definition as it was in O levels. In a similar way, reduction is the addition of hydrogen. It's the loss of oxygen or the removal of oxygen. And third thing is it's a gain of electron. Okay, so these are the very basic definitions. एक definition और आपने पढ़ी होगी. Oxidation is the increase in oxidation number. And reduction is the decrease in oxidation number. ठीक है बेटा. So obviously, the definition of a redox reaction, the type of reaction in which both oxidation and reduction taking place simultaneously. Oxidation की तीन definition, reduction की तीन definition. Yes, by looking at the chemical equation, हम बहुत आराम से बता सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, you have a carbon reacting with oxygen, forming carbon dioxide. You can easily say that the carbon is getting oxidized. Why? Because it is an addition of oxygen taking place. So very basic concept. लेकिन यहाँ पर मैंने एक नई चीज लिखी. Yes, we have done this one in O levels as well, which is the oxidation number. Okay, so it's very easy to predict either it is oxidation or reduction just by simply looking at the oxidation number. So if you know how to calculate the oxidation number, you can easily predict either it's oxidation or reduction taking place. Now, the first question is, what is the oxidation number? Oxidation number hota kya hai? Any idea what is an oxidation number? Kya hai bhai oxidation number? Begin. Whenever you have any covalent compound form, whenever you have any molecule form, there must be a charge on any atom in a molecule. The oxidation number is a charge on any atom in a molecule. Okay. Uncombined element के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है ना. तो वो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. ठीक है, क्लियर. अब सवाल ये है कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब हेलोजन, हमने बोला कि as it belongs to the group 7 of the periodic table, the charge on all halogen is always -1. So क्या ये -1 oxidation number है? No, this -1 is basically the valency.
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क क्या है? वैलेंसी इज अ नंबर दैट वी यूजुअली प्रिडिक्ट बाय लुकिंग एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने और चाहिए? 3। सॉरी, यस 3। तो आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -3 का। तो दैट्स वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एनी ऑन एनी एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपके पास यू हैव CO2, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 का होगा और कार्बन पे चार्ज होगा +4 का, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इन अ सिमिलर वे इफ आई आस्क यू अबाउट NO2, नाइट्रोजन ग्रुप 5, वैलेंसी इज ऑलवेज -3। नाइट्रोजन पे हमेशा चार्ज क्या आता है? -3 का। बट इन दिस कोवलेंट कंपाउंड ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज आएगा +4 का, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू। So you know the difference between the valency. Valency is something that we can easily predict by looking at the periodic table. Group 1 है तो it's always +1, group 2 है तो +2, group 3 है तो +3, group 7 है -1, group 6 है -2, because it requires 2 electrons to complete its octet. But oxidation number you have to calculate every time whenever element is present in any molecule. यानी आपके पास क्लोरीन वैलेंसी -1 होती है, लेकिन अगर क्लोरीन समटाइम्स ClO3 बनाता है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल में जब कोई एलिमेंट है उस पे चार्ज क्या मौजूद है, दैट्स। अच्छा, चार्ज प्रिडिक्ट कैसे होता है? वी हैव टू आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस और कार्बन पे चार्ज होगा प्लस। अब ऑक्सीजन तो नॉर्मली -2 ही बनाता है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज आएगा 2 ऑक्सीजन की वजह से +4। ये इस तरह वर्बली प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो वी नो द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, और हम उस मेथड को अभी सीखेंगे और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी सारी स्टोरीज आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। वैलेंसी का पता चल गया। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पे डिपेंड करता है, इट्स डिफरेंट। ठीक है, सो कैन आई से दैट ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द चार्ज ऑन एन एटम ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is always negative. It always have negative charge. तीसरी बात, अनकंबाइंड एलिमेंट मॉलिक्यूल के साथ ना राइट डाउन द कंपाउंड एज वेल। ठीक है, अनकंबाइंड एलिमेंट हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इस बात की एग्जांपल क्या होगी बेटा? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, आप बोलेंगे जीरो, बिकॉज इट्स एन एलिमेंट। नाइट्रोजन ऑलवेज जीरो, सोडियम ऑलवेज जीरो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही कहां आता है बेटा? व्हेन यू हैव अ कंपाउंड। ठीक है, so oxidation state की definition, it is the charge on an element in a molecule. More electronegative element always have a negative charge. Uncombined element have a zero oxidation state. ठीक है, how to find out the oxidation state? How to calculate oxidation state? मैं कैलकुलेट की टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कुछ चीजें इसमें प्लस माइनस करनी पड़ती हैं, तो टेक्निकली इट्स अ कैलकुलेशन। ओके,
Now, to find out the oxidation state of any element in a molecule, we have to keep in mind, और कुछ elements ऐसे होते हैं जिनकी oxidation state कभी change नहीं होती, तो हम उन्हें use करते हैं और किसी भी unknown element की oxidation state find out करते हैं. अब कौन कौन से fix हैं वो हम देख लेते हैं. You have group 1 element, group 2 element और ग्रुप 3 एलिमेंट. इन सब पे हमेशा चार्ज इस पे +1, +2 और प्लस. देयर वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज सेम. यानी अगर सोडियम है तो सोडियम इज ऑलवेज +1. इफ यू हैव मैग्नीशियम हमेशा +2 होगा, और अगर एल्युमिनियम है तो इट्स ऑलवेज +3. ठीक है. इन अ सिमिलर वे ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज होता है -2 का. देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, जब ये पर ऑक्साइड की फॉर्म में हो. पर ऑक्साइड जैसे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. इन दिस वन ऑक्सीजन हैव अ चार्ज ऑफ -1. ठीक है. ऑक्सीजन हैव अ चार्ज ऑफ -1. बाकी हर जगह ऑक्सीजन, तो हम मेन केसेस में हम कैसे यूज करेंगे? यूज ऑक्सीजन. अच्छा, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन हैव अ +1 चार्ज, हमेशा +1 होता है. एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड्स में हमेशा याद रखिएगा, जैसे NaH है, in all metal hydrides the metal is always positive and hydrogen have a charge of -1. ठीक है. तो एक की पॉइंट क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली विद मेटल हाइड्राइड इट इज नेगेटिव. आई होप पॉइंट क्लियर है. सही है. सो हम हाइड्रोजन को भी यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, और कुछ चीजें हैं, कुछ आपके पास जो है वो आयंस हैं जिनके चार्ज फिक्स होते हैं. समटाइम दोज चार्जेस आर हेल्पफुल टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे you know that we have OH with a charge of -1, है ना? OH negative hydroxide, NH4 positive, SO4 2- sulfate. ठीक है. PO4 3- phosphate. इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, दे आस्क इन एग्जाम. ये सल्फेट है, दिस वन इज phosphate, and this one is carbonate. Excellent. And HCO3 negative, this one is hydrogen carbonate. ठीक है बेटा. तो ये कॉमन है, इनकी बहुत ज्यादा, इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हमें बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़े, बट यू शुड नो अबाउट दिस. एंड दिस वन, चले इनको सबको ही लिख लेते हैं. दिस वन इज हाइड्रोक्साइड and this one is ammonium ion. How many different type of bonding is present in an ammonium ion? NH4 positive में बोलो बोलो. NH4 positive में, yes, you have a covalent bonding and you have a dative bonding. Shape and bond angle. And the bond angle is? Yes, the shape is tetrahedral and the bond angle is 109.5. ठीक है. थोड़ा सा shape और bond angle आपको जहन में रखना पड़ेगा. Now, the first example. If I ask you, ये कॉपी हो गया? If I ask you, find out the oxidation state of nitrogen in NH3. Nitrogen is element जिसकी oxidation state find out करनी है. ठीक है. The first example is example of a neutral molecule NH3. मैंने अंडरलाइन किसे किया है बेटा? The underline element is nitrogen. Okay, method is quite easy. You have to find out the oxidation state of nitrogen. Write nitrogen as it is. Plus hydrogen पे charge कितना होता है बेटा? Nitrogen is not a metal, it's a non-metal, so it's always a +1 charge. And how many hydrogen you have? 3 hydrogen. So 3 times of +1 is equals to overall charge. Overall charge का मतलब, as this is a neutral molecule
है ना, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने इज इक्वल्स टू 0 लिया इसे, एंड इट बिकम नाइट्रोजन +3 इज इक्वल्स टू 0, नाइट्रोजन आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। आप यहाँ क्लियर है ना, डेफिनेशन क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है क्लियर है, फिक्स है कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 ओनली इन पर ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली -1 H पॉजिटिव पे हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट metal hydride, and then you have sulfate, carbonate, nitrate, ये दो लेवल से आप करते आ रहे हैं, and that's how you find out the oxidation state of a underlying element in a neutral molecule. If I ask you कि भाई मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए सल्फर की in SO3, the underlying element is sulfur. So can you find out the oxidation state of sulfur in SO3? So नाइट्रोजन हम मेथड ही अप्लाई कर देते हैं ना जो हमने सीखा है, सल्फर +3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0 because it's a neutral molecule. Sulfur -6 is equals to 0. Sulfur is equals to +6. ठीक है बेटा, that's how. Now again, another molecule, neutral molecule, H2SO4, and I'm asking you to find out the oxidation state of sulfur. H2SO4, इसमें sulfur की oxidation state find out. Don't do it verbally. It's wrong. देखो, है ना? Now, सिर्फ सल्फर की फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव 2 हाइड्रोजन, सो 2 टाइम्स ऑफ +1 प्लस सल्फर फाइंड आउट करना है +4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0. सो सल्फर -6 इज इक्वल्स टू 0, सल्फर इज इक्वल्स टू +6. देखो इज इक्वल्स टू कर तरफ जाएगा ना बेटा, है ना? -8 और +2 is sulfur -6 is equal to 0, sulfur is equals to +6. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप +6 करेंगे, उधर लेके जाएंगे, ठीक है? कैन यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4? नाउ द अंडरलाइन एलिमेंट इज फॉस्फोरस. ट्राई कीजिए. +5, ठीक है. Let me check. -4, -8, +3, that's phosphorus is +5. Good, excellent. And whenever they ask you about the oxidation state, no matter the answer is positive, you have to write +1, +2, +5. Charge जरूर लिखना है, चाहे positive हो चाहे negative. Now the positive ion. Again, the same question. If I ask you that find out the oxidation state of nitrogen in NH4 positive. So nitrogen +4 times of +1 is equals to, what should be the overall charge? +1 के equate करेंगे, ठीक है? Now the charge is +1, so you have to take it is equals to +1 के बराबर. Good. So nitrogen +4 is equals to +1, and the nitrogen is going to be -3. ठीक है? You can see NO2 में नाइट्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन -3 था, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन -3 है, बट नाइट्रोजन है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी एक क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव आयन. Okay, let's suppose if I ask you to find out the oxidation state of carbon in CO3 2-. Carbon is the underlying element. Can you find out the oxidation state of carbon?
+4. ओके राइट, तो वन मोर एग्जाम्पल, नेगेटिव आइंस की तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। MnO4 negative and manganese is the element whose oxidation state you have to find out. Manganese की oxidation state निकाल। जब तक यू कॉल इट +7, जब तक आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज विद द चार्ज। Cr2O7 2 minus, and you have to give me the oxidation state of chromium, of 1 chromium, ठीक है। Excellent बेटा, good. So the answer is +6, ठीक है। What's the oxidation state of sulfur solid? 0, because it's an uncombined element. Okay, so oxidation state, I hope you can calculate the oxidation state of a neutral molecule of a positively charged ion and a negatively. Key point is that you have to equate it with the overall charge. यानी is equals to के दूसरे साइड पे overall charge आएगा। पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, +1 ले लो, 0 है, 0 ले लो, -2 है, -2 ले लो, and that's it. Now the most important part is the change in oxidation number. Whenever there's a redox reaction taking place, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। अगर कोई +2 से 0 हो रहा है तो चेंजेस -2, कितना चेंज आ रहा है वो आपको निकालना आना चाहिए। So the change in oxidation number. How to find out the change in oxidation number? Let's suppose you have a reaction in which nitrogen is going to NO2 and then NO2 से ये जा रहा है जनाब NO में। What is the oxidation state of nitrogen here? 0. What is the oxidation state of nitrogen here? -+4. NO2 में nitrogen is +4. What is the oxidation state here? +2. As I said, oxygen is always minus with nitrogen. तकरीबन सबके साथ, ठीक है। Now, what is the change? Change आ रहा है +4 का। +4 is basically the change in oxidation state. Change का मतलब क्या होता है? Final minus initial. So final is 4, initial is 0, 4 minus 0. और यहाँ पे 2 minus 4, यहाँ कितना चेंज आ रहा है +4 से -2 में जाने में? Yes, the change is -2. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इनिशियल ऑक्सीडेशन +2 है, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल से आपके पास चेंज आ जाता है हमेशा ही, इन केस अगर आपको चेंज निकालने में कोई मसला हो रहा है, ठीक है। So that's how you find out the change in oxidation state. ये भी बहुत easy है। If you know how to find out the oxidation state, you can easily calculate the change in oxidation state. ठीक है? If I ask you, there is a chemical reaction taking place in terms of oxidation state, आप मुझे बताइए कि which molecule or which element is getting oxidized and which element is getting reduced. Let's suppose this is a chemical reaction, MnO4 negative plus Fe2 plus 8H positive forming Mn2 plus Fe3 plus 4H2O. This is the reaction, ठीक है। एंड आई एम आस्किंग कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो आपने क्या करना है, बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा
whatever the element present, आपने उनकी oxidation state calculate कर लेनी है. तो we have calculated this one +7 and this one +2, and you can see is in the oxidation state. So this is a reduction. This one is getting reduced or change कितना आ रहा है बेटा? -5. So reduction is a decrease in the oxidation state. In a similar way, iron is getting +2 से कितने में जा रहा है? +3 में. So it's getting oxidized, है ना? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और चेंज कितना आ रहा है? +1 का. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. So you can easily predict which element or which, can I say that MnO4 negative is an oxidizing agent? है ना? Because it's making iron 2+ to get oxidized to iron 3+. क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं? बिल्कुल ठीक है. कैन आई से दैट MnO4 negative itself getting reduced, खुद reduce हो रहा है, and that's the idea for the oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो अल्टीमेटली खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा उससे. ठीक है. सो यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द substance that reduce itself and oxidizes other. ठीक है जी. So that's how you have to predict it. Now some questions. Some questions of redox reaction. P1. Now, chlorine dioxide is produced on a large scale as it is used for bleaching paper pulp. ठीक है. It is made by the following reaction: 2ClO negative SO2 forming. How do the oxidation number of chlorine and sulfur changes in this reaction? Change in oxidation number. So आप क्या करें जनाब? पहला क्वेश्चन ये आता है कि find out the oxidation state of chlorine in ClO3 negative. The question is, do I have to multiply by 2? इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to calculate the oxidation state? No. The coefficient of a balanced chemical equation are not included. You just have to find out the oxidation state of chlorine in ClO3 negative. 2 लिखा है, 3 लिखा है, उससे कोई फर्क ना, उससे change in oxidation state पे फर्क आता है. ठीक है. These coefficient are for balancing purpose. इनसे oxidation state में फर्क नहीं आएगा. अब बताइए कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्लोरीन की? गुड. और यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस प्लस +4. So the oxidation state of chlorine decreases by 1. So either this one or this one. Now look at the other element. Sulfur is यहाँ पर -2 times 2 -4. So the sulfur is, and here the sulfur is +6. हम सल्फेट में कैलकुलेट करके आए. Sulfur is +6. So the oxidation state of sulfur changes, increases by 2 unit. How simple it is. आसान है ना? Now this reaction, for sure, these are very easy questions. Now it says the nickel cadmium rechargeable battery is based. देखिए, whenever the question is easy, जब भी method easy होगा ना, they try to make question look difficult by using some sort of a difficult explanation. सवाल वही है, इक्वेशन गिवन है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और बिगनिंग और एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बता दीजिए. ठीक है ना? एंड दे मेक इट बाय कैडमियम निकल रिचार्जेबल बैटरीज एंड दिस एंड दैट, ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगे. नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल एट द बिगनिंग? निकाल लेते हैं जनाब. दिस इज NiOOH. इसको ये O2 भी लिख सकता था. ठीक है ना? सो आपने निकाला भाई निकल प्लस -2 for one oxygen, -2 another oxygen, and +1 for hydrogen is equals to 0. Nitrogen -3 is equals to 0. Nitrogen is equals to, sorry, nickel is equals to +3. So at the beginning the oxidation state is +3. सही ना बेटा? Now at the end NiOH twice. What is the charge on OH? -1. Hydroxide is OH -1. तो निकल पे चार्ज कितना आ जाएगा?
because you have two hydroxide ion present. -2 हो जाएगा, नहीं निकल +2 हो जाएगा, OH नेगेटिव -2 हो जाएगा, निकल इज +2। देखिए हम इस तरह भी कर सकते हैं इसे, निकल प्लस, अब OH है ना, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1, यानी ब्रैकेट के अंदर चार्ज है -1 इज इक्वल टू 0, तो निकल +2 आ जाएगा आपके पास। N+2 वाला ऑप्शन सी इज बेसिकली राइट ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। Which conversion involve a reduction of chromium? ठीक है, यू शुड बी वेरी फ्रीक्वेंट और आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट क्विकली, बहुत तेजी के साथ। हियर इट इज, इट सीम्स लाइक +6 है ना, और यहां पर भी मुझे नजर आ रहा है 3 to the 6 +6। द चेंज वन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर, गुड। 4 to the 8 +6, और यहाँ पे नजर आ रहा है 7 to the 14, यहाँ भी +6 है। Am I right? चेक करते रहना। यहां पे निकालते हैं -4 -+6। मैं इसको दोबारा कर रहा हूं यहां आप लोगों के लिए, CrO2Cl2, ठीक है ना, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो जनाब क्रोमियम +2 times of -2 +2 times of -1 is equals to 0। Agreed? Cr -4 -6 is equal to 0। Cr is equals to, और मैंने +6 लिखा था, और यहां पर हो जाएगा 4 to the 8 -2 -8 +6। हाँ, Cl पे हाँ -1 ही लगाना पड़ेगा अगर आपको किसी ट्रांजिशन मेटल की कैलकुलेट करनी, अदरवाइज क्लोरीन पे -1 के अलावा। देखिए अभी आप आगे करेंगे ना, जब क्लोरीन के रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्लोरेट्स are the only like you can say the molecules of chlorine that have a plus oxidation state of chlorine, ClO3 ClO नेगेटिव, ये सब इन्हीं पे चार्ज होता है। बाकी यहाँ अगर आपको क्रोमियम या आयरन निकालना है तो क्लोरीन -1 ही लगाएंगे आप। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं, +6 और यहाँ हो जाएगा 3 to the +3, है ना। सो देयर इज अ रिडक्शन टेकिंग प्लेस एंड यू कैन सी द डी ऑप्शन, यानी आपको बारी बारी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके डी तक पहुंचना है, यू हैव टू डू इट इन लेस देन अ मिनट। तो यू शुड बी वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी क्विक इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मेक श्योर कि आप सही करेक्ट कैलकुलेशन करें। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 12, कैन यू हैव अ लुक? Okay, let me show you the question. In which step is the change in oxidation number of nitrogen different to the change in the other steps? NO3 negative nitrogen is +5. NO2 negative nitrogen is +3. The change is NO, the change is N2O changes +1. हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। 0 the change is, so A is the only option where there is a change of -2. And this is the same reaction I was talking about. What are the oxidation number of chlorine in each of the species? Cl2 में chlorine का oxidation number, good. NaCl में solved, done, है ना। Sodium is +1, so chlorine is -1, done and done. ठीक है, okay. Keep this equation in mind. You can see one reactant chlorine making two chlorine containing product, ऐसे ही ना, एक NaClO3 और एक NaCl बना रहा है। मैं इसी बात को लेके यहां वापस आ रहा हूं और एक और छोटी सी चीज आपको बताने चाह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अ टाइप ऑफ redox reactions
in which a single element getting oxidized and reduced simultaneously. ठीक है? Normal redox reaction में क्या होता है? One element is getting oxidized, the other element is getting reduced. But in a disproportionation reaction, a single element is getting oxidized and reduced simultaneously. जैसे the reaction of Cl2 with NaOH forming NaCl, NaClO3 plus H2O. Let me just have a look at the balancing. Okay, this is a balanced equation, which which is a disproportionation reaction. कैसे? Chlorine, the oxidation state at the start is 0. ऐसे ही ना? Now, in NaCl, the oxidation state of chlorine is -1, and in NaClO3, the oxidation state of chlorine is +5. चाहे तो calculate कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. Now you can see in this NaCl, chlorine is getting reduced. In a similar way, going from 0 to +5, the same chlorine is getting oxidized. और change कितना आ रहा है जनाब? यहाँ पे change आ रहा है -1 का, ठीक है, reduction है, और यहाँ पे change आ रहा है +5 का. This is oxidation. ठीक है? I hope the point is clear. A single element making two products, one is the oxidized form and one is the reduced form. ये इस टाइप के रिएक्शन कहलाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. हमेशा रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट जो होगा प्रोडक्ट साइड पे उसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रोडक्ट्स फॉर्म. ठीक है? So this is called a disproportionation reaction. A single element is getting oxidized. We will do this reaction in group 17 जिसे हम कहते हैं हेलोजन वाले चैप्टर में. The reaction of chlorine with sodium hydroxide at 70 degree, जो कि बोर्ड पर इक्वेशन है आपके पास अभी, and the reaction of chlorine with sodium hydroxide at 15 degree Celsius. ये दो different reaction है जो disproportionation reaction की example है. And one example is the reaction of chlorine with water. तो हमें ये examples जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. ठीक है? So I'm just moving towards मुझे बताइए कि I hope कि you can easily do these type of oxidation state वाले question आराम से. Question number 16. The oxide of titanium TiO2 is used as a whitener in a toothpaste. It obtained from the ore iron titanate. ठीक है? What is the change, if any, in the oxidation number of titanium in the reaction? तो जनाब ये change हो रहा है FeTiO3 2 से जा रहा है TiO2 में. सही है? So TiO2 में the oxidation state of titanium should be +4. Agreed? यहां निकाल लेते हैं. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी? आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल और ऑक्सीजन तो -2 होता है. आयरन की जगह पे क्या लगाऊं? क्यों? ठीक है, नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. आई डोंट नो इन दिस कंपाउंड आयरन इज +2 और +3, लेकिन लुक एट दिस, दिया था उसने. हमेशा ट्रांजिशन मेटल वो बताएगा अगर उसे यूज करना होगा. तो आयरन इज +2, ऑक्सीजन -2, तो यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4 ही आ रहा है. 3 to the 6 -2 -4. So is there any change in the oxidation state?
तो इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं, मेटल्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नहीं, ग्रुप 1 transition metals तो are the most frequently asked question कि transition they have the variable oxidation state. Copper sometime +1, copper sometime +2. मैंने जो लेक्चर में लिखवाया है this is about the group 1 metal. this देखो सही है, ग्रुप 1, 2 और 3 ट्रांजिशन तो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट इट बेटा, वो कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन, and this is the last one we are going to do, which is this one. सही है, चलो जल्दी से सॉल्व करें, and then in the next session we will do about the balancing of redox equation. So VO2 plus SO2 forming V3 plus SO4 2 minus. So VO2 plus पे what is the oxidation state on vanadium in VO2 plus? So minus VO2, sorry, this is +1. Okay, so -2 -4 -4 मान चला जाएगा +4 +5. Good. And V +3 में जा रहा है क्योंकि ये तो 3+ है, ठीक है। सल्फर +4 में है और जा रहा है +6 में। By the time I think you can going to memorize कि SO4 में, sulfuric acid में, sodium sulfate में, whenever you have sulfate ion, sulfur is always +6. sulfate में SO4 2 minus में sulfur हमेशा +6 होता है, चाहे वो sulfuric acid हो, sodium sulfate हो, potassium sulfate हो, sulfur हमेशा +6 होगा, ठीक है। I hope you can calculate this. So yes, we done with this section, and the next section is basically about the balancing of redox equation. We're going to do it in the next session.